Good morning, dear students. Welcome back in your computer class. In the last video, I have covered chapter 4. Some of the topics were remaining, but right. So here we are going to discuss the upcoming topics. So last time we have covered types of chart. In this we have completed column chart, line chart, then your pie chart, bar chart, area chart, right? Now one more is remaining here, that is your scatter chart. Other than this we are having some subtype chart also. So moving on to the scatter chart, see, a scatter chart displays a pair of values in the scatter format. Scatter format means जैसे कि होता है ना कि means there is not any particular area, there is not any particular line by which you will represent that. ठीक है. So scatter का मतलब क्या होता है, like we are having a x axis here horizontally and here we have a y axis vertically. So here we are writing suppose numbers. I can write anything. I can write the categories also, like I can mention the name of the students. Fine. Then vertically I am writing some values again. Here 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 up to 90. Here we are writing the numbers from 0 to 5. Now check it out. This is diamond shape, which is used to represent the marks in English subject. Fine. So we are saying that student 1, or I can say roll number 1 in English got 50 marks. So mark it here with the diamond shape box. If we talk about student 2, or we can say roll number 2, then that student got how many marks? You can mark it here. This is your what? 75. Next, student number 3 got 80 marks. Student 4 got 60 marks. So this is how you are going to represent the marks in English subject, like this, this and this. But you are not going to join these points. There is no need to join the points because the topic says it is a scatter chart. So don't join it, just only mark it. Just only keep some point there. In the same way, for math subject, we are using a square shape. Okay? So student 1 got 70 marks in maths, student 2 50 marks, student 3 40 marks, student 4 70 marks. Right? Then same for science. For science, we are representing it with a triangle sign. So for science subject, student 1 80 marks, student 2 60, 3 50 and fourth student got 80 marks. So this is how you can represent it with the different shapes, marks in the different subjects. This is your scatter chart here. Moving on to the other chart, we are having surface chart, donut chart, bubble and radar chart. And all these you can check it out when you will do the practical. At that time you can check it the different types of chart. Next is here subtype charts. Subtype means the part of chart, means a part of a chart is known as the subtype chart. For example, if I say about column chart, so this is how the column chart looks like. This is the way. सो कॉलम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो ये लाइंस होती हैं, जो लीजेंड्स होते हैं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस वर्टिकली, है ना. मीन्स अ प्रॉपर कॉलम्स आर देयर. सो कॉलम्स कैन बी 2D कॉलम की बात करें सो इट शुड बी लाइक दिस. 3D कॉलम में इट विल लुक लाइक दिस. कॉलम जो होते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सिलेंडर फॉर्म ऑल्सो. मतलब ये तो हो गया वर्टिकल लाइन, इसको थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं. दिस इज सिलेंडर सब टाइप कॉलम चार्ट. Same, that column can be represented in the form of cone. So we are making here cone. ठीक है. Next is your pyramid. So this is how the pyramid looks like. Means all these are the types of the column chart, but the way of representing it or the way of making it is different. Means the appearance of the chart will get changed, but all these will be considered as a column chart only. Now if I talk about line chart, so here we have the line chart.
ठीक है. सो लाइन चार्ट के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. लाइक 2D प्लेन में अगर हम करेंगे सो इट विल लुक लाइक दिस. 3D प्लेन में इट शुड बी लुक लाइक दिस. We are having some more representations also. So if I want some more representations for the line chart, I can click on all chart types. Same we are having with the pie chart also. ठीक है. So these all are the subtypes. Next is subtypes of bar chart. बार चार्ट में इस तरीके से बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. कॉलम्स क्या हो जाते हैं, कॉलम्स विल लाई डाउन एंड वी विल से इट एज अ बार चार्ट. तो यहाँ पे आपके पास कॉलम्स जो होते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होते हैं बार की फॉर्म में. तो यहाँ पे देखो ऑल दीज आर बार चार्ट इन द फॉर्म ऑफ कोन, सिलेंडर, पिरामिड, 2D bar and 3D bar. We can check it out here: area chart, scatter chart and some more types of chart. So the practical of this I will tell you when I will take the live class. At that time it will become more clear that how we can create the subtypes of the chart. Fine. Next topic. How to create charts in Excel. So there are two ways to create chart in MS Excel 2007. First thing is by using the shortcut keys. By using shortcut keys, and second way is to follow a long method, that means with the help of tab, present on MS Excel. So shortcut keys क्या होती है हमारे पास, you can press Alt F1 to create a chart or F11 key to create the chart. Fine. So this is the way to represent the chart in Excel. Then second way is option number 2. We follow these steps to create a chart of our choice. Now suppose I want to create a chart. So firstly we should have a table for which I want to create the chart. So firstly we will make a table like this where we will give the names of the students here. Suppose, ठीक है, write the names here, and suppose marks in English subject, marks in maths, marks in science and so on. So this is how you will fill the complete table. After making this table you will create the chart. So the step number 1 says select the cells from the table. ठीक है, जिस पर्टिकुलर के लिए आपको क्या करना है, चार्ट क्रिएट करना है, उन सेल्स को सिलेक्ट करो. एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट द चार्ट फॉर द होल टेबल देन सिलेक्ट द कंप्लीट cells of the table. Step 2 says click on the insert tab from the ribbon. Means there is a tab which is known as insert tab. insert tab पे क्या होता है, हमारे पास चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, राइट. तो insert tab पे कौन सा ऑप्शन होता है, चार्ट ऑप्शन. सो क्लिक ऑन द insert tab. Third step says select the required type of chart from the chart group. Means select the chart which you want to make. Like if you want to make column chart, select column option. Bar chart, line chart, scatter chart, means whatever type of chart you want you can select it. Step number 4 says select the chart subtype from the drop down list. अब आपने कॉलम चार्ट किया. अब कॉलम में भी क्या होते हैं, वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस. लाइक वी वांट टू क्रिएट कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कोन, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, 2D or 3D, whatever type I want. So I can select the subtype. If I will not select subtype then it will create a simple column chart. So here you can see we have already created a table, and when I will select all the cells of this table I will get this type of chart, and this is your column chart here. Next thing, after making the chart, ठीक है, there is a tab known as format tab. Using this format tab I can change the design and layout of the that means we are having the different type of tabs from which I can change the style of the chart, I can change the format of the chart. So whatever design I want I can select it from the design tab, from layout tab and from the format tab. So अगर कुछ भी आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है चार्ट पे तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टैब होते हैं. Now the thing is how to change the chart type using the design tab. Now suppose you already made a column chart but you don't like that chart. आपको क्या लगा कि this chart is not correct or this chart is not that much looking
वेरी अट्रैक्टिव. सो व्हाट यू विल डू, यू कैन चेंज द चार्ट टाइप, है ना. तो चार्ट टाइप को अब हमें क्या करना है, कॉलम चार्ट से किस में चेंज करना है, पाई चार्ट में. दिस इज हियर आई एम हैविंग पाई चार्ट. So suppose this is not looking very attractive, I want to make the pie chart. So what I will do is double click on the chart. जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे ऑन द वेरी टॉप साइड यू विल गेट अ डिज़ाइन टैब. यहाँ पे ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा हेयर डिज़ाइन टैब. ठीक है. आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप. जैसे आप चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक विंडो ओपन होके आ जाएगी जस्ट लाइक दिस. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस. यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे कि किस टाइप का चार्ट आपको चाहिए. आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, यू विल सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट विच एवर यू वांट. मुझे कौन सा चाहिए था, कॉलम्स को किस में कन्वर्ट करना है, पाई चार्ट. सो फ्रॉम हेयर आई विल सिलेक्ट पाई ऑप्शन. और जैसे ही पाई पे मैं क्लिक करूँगी हमारे पास इसके सब टाइप्स ओपन हो जाएंगे. तो इस सब टाइप में से आई कैन सिलेक्ट एनी वन. ठीक है. सो हेयर स्टेप 3 सेज सिलेक्ट द न्यू चार्ट टाइप. हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, पाई चार्ट. एंड सब टाइप फ्रॉम द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स. और पाई चार्ट में भी सब टाइप्स होते हैं. सो इफ़ यू वांट सब टाइप ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट इट. एंड द स्टेप नंबर 4 सेज क्लिक ऑन ओके बटन. दिस इज हियर वी हैव ओके बटन. So when you will complete all these 4 steps, you can see your chart will get changed from column chart to pie chart. Fine. Next, changing the chart style. Now we have created the type of the chart. Like if we are having a line chart, I want a bar chart. So line को bar में convert करना है तो वो होता है chart type ही change कर रहे हैं. But if I say chart style, तो स्टाइल का मतलब क्या है, लाइक उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, अपीयरेंस चेंज करनी है. सो आई विल से दैट इज़ द चार्ट स्टाइल. सो हाउ टू चेंज द चार्ट स्टाइल. स्टेप नंबर 1, डबल क्लिक ऑन द चार्ट फॉर विच यू वॉन्ट टू अप्लाई द स्टाइलिंग. फाइन. सो डबल क्लिक ऑन दैट चार्ट. जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे यू कैन सी ऑन द टॉप यू विल गेट द डिज़ाइन टैब. यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा डिज़ाइन टैब. Then step number 2 is click on more button from the chart styles group. यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो मिलेगा जस्ट लाइक दिस. दिस इज़ योर मोर बटन. तो जैसे ही आप इस डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल चार्ट स्टाइल्स आ जाएंगे कि आपको कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है. तो मल्टीपल स्टाइल्स यू कैन सी फ्रॉम देयर. दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इज़ क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड स्टाइल फ्रॉम द गैलरी दैट अपीयर्स. मीन्स जो वो गैलरी, जैसे आप मोर बटन पे क्लिक करोगे मल्टीपल ऑप्शंस विल कम. ठीक है. फ्रॉम दैट यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द स्टाइलिंग विच यू वांट फॉर योर चार्ट. जैसे ही चार्ट पे स्टाइलिंग अप्लाई करोगे देन आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ये देखिए स्टेप नंबर 3, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स आ रहे हैं. These are all are the styles of the chart. You can select any one. कोई भी एक select करो. Suppose they are selecting this in which the background color is black. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सो ऑटोमेटिकली आपका चार्ट का जो स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा. फाइन. सो दिस इज हाउ टू चेंज द स्टाइल एंड टाइप ऑफ द चार्ट. नेक्स्ट थिंग, चेंजिंग डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट. अगर आपको डेटा चेंज करना है या टेक्स्ट चेंज करना है एक चार्ट के अंदर तो कैसे करोगे. सपोज चार्ट में समवेयर यू हैव रिटन इंग्लिश, ठीक है, बट यू डोंट वांट इंग्लिश मार्क्स. एक्चुअली इन प्लेस ऑफ इंग्लिश यू वांट सपोज कंप्यूटर मार्क्स. ठीक है. तो अगर आपको चेंजेस करने, इंग्लिश को रिमूव करके आपको कंप्यूटर ऐड ऑन करना है तो क्या करोगे, यू कैन नॉट डायरेक्टली मेक द चेंजेस इन द चार्ट. जैसे आपके पास एक चार्ट बना हुआ है लाइक दिस. So you cannot make the changes directly in the chart. What you can do, you have already created a table in which you are having the marks of all the students in the different subjects. So from there you will change it, and as soon as you will change the data or the text in your table, automatically it will reflect it back into your chart. Means what? इट मीन्स कि अगर आपको क्या करना है, कोई भी चेंजेस चार्ट के अंदर करने हैं, कोई भी डेटा चेंज करना है या किसी के मार्क्स को अपडेट करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो चार्ट में नहीं कर सकते हो. कहाँ करोगे, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जिसके लिए आपने चार्ट बनाया है.
राइट. तो चार्ट के अंदर यू विल चेंज, सॉरी दैट टेबल के अंदर यू विल चेंज द डेटा. व्हेन यू विल चेंज द डेटा ऑटोमेटिकली वो जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट भी क्या हो जाएगा, विल गेट चेंज. सो दिस इज हाउ चेंज डेटा विल टेक प्लेस. नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट द डेटा इन टेक्स्ट इन अ चार्ट. अब वही मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है चार्ट से तो क्या करोगे, यू कैन नॉट मेक द चेंजेस डायरेक्टली इनटू द चार्ट. क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन दैट रेस्पेक्टिव वर्कशीट जिसके लिए आपने बनाया है. उस वर्कशीट को ओपन करोगे, मीन्स उस टेबल को ओपन करोगे, वहाँ से डिलीट करोगे, सो ऑटोमेटिकली इट विल गेट डिलीटेड फ्रॉम द चार्ट ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग, रीसाइजिंग एंड मूविंग चार्ट्स. रीसाइज करने का मतलब है आइदर यू कैन इंक्रीज द साइज और यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द चार्ट. एंड मूविंग चार्ट मीन्स टू शिफ्ट द चार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. This is resizing and moving chart, right? So suppose if we are having a chart like this, एक chart है हमारे पास which is drawn into your this area, ठीक है. So we have, read out here what is given. We have the option to resize and move a chart in MS Excel. Handle is the process used to adjust a chart by dragging the chart frame. एक handle होता है, handle क्या होता है, हैंडल मीन्स एक फिल हैंडल होता है आपके पास. सो टू रीसाइज द चार्ट इन प्रोपोर्शन, ड्रैग द कॉर्नर हैंडल ऑन द चार्ट डायगनली. मीन्स यू विल टेक योर माउस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. जैसे ही आप अपना माउस का कर्सर लेके जाओगे ऑटोमेटिकली योर कर्सर विल गेट चेंज इनटू अ साइन ऑफ प्लस. और यहाँ से आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करोगे एंड यू विल ड्रैग इट. अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे साइज विल गेट डिक्रीज. इफ़ यू विल ड्रैग इट अपवर्ड्स साइज विल गेट डिक्रीज. ठीक है. सो द स्टेप इज you have to take your mouse cursor on the lower right corner. lower right corner पे अपना mouse cursor लेके जाओगे, click it over there and then drag it downwards and upward to increase or decrease the size. This is how to resize a chart. And how to move a chart. To move a chart, point anywhere inside the chart and drag it in the required direction. Means आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर चार्ट पे क्लिक करना है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन. उस पर क्लिक करके रखना है एंड उसको क्या कर देना है, ड्रॉप इट समवेयर एल्स. मीन्स लीव योर माउस कर्सर टू सम एल्स लोकेशन. सो ऑटोमेटिकली योर चार्ट विल गेट शिफ्टेड. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिंट द चार्ट. सो वी फॉलो दीज स्टेप्स टू प्रिंट अ चार्ट. प्रिंट कराने के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव अ प्रिंटर टू प्रिंट अ चार्ट. ठीक है. सो आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए चार्ट को प्रिंट करने के लिए, उसकी हार्ड कॉपी निकालने के लिए या उसको पेपर फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए, राइट. सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द रिक्वायर्ड चार्ट टू बी प्रिंटेड. वट एवर चार्ट यू वॉन्ट टू टेक द प्रिंट आउट फॉर विच यू विल टेक द what you will do, you will select it. ठीक है. So select the required chart to be printed. Next is click on the office button. Now this is here on the top. This is known as your office button. Next is click on print option. We see the print dialog box. So as soon as you will click on this office button, you can see multiple options will come. And out of those multiple options, we will get a option which is known as print. So when you will click on this print option, you can see a new print dialog box will get open, where all the details or all the properties of the printing will be shown to the user. So यहाँ से हम क्या select कर सकते हैं इस वाले dialog box से कि हमको कितनी copies चाहिए, है ना. लाइक 1 कॉपी, 2 कॉपी ऑफ द चार्ट, 3 कॉपीज़, सिंगल साइडेड पे चाहिए, डबल साइडेड पे चाहिए. तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ट फ्रॉम हियर. नाउ स्टेप नंबर 4, आफ्टर सेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन. सो हेयर यू कैन सी दिस इज हेयर स्टेप नंबर 4. this is your OK button. So when you will click on this, that means your printer will get the command and you will get the printout of that chart. So we have completed the resizing and moving the chart and how to print the chart. Then at the last here we have some important thing, that is do you know. In do you know we are having the shortcut keys which you all should know, because in the exam shortcut keys will definitely come. So first thing is we are having control plus P. CTRL stands for control. So control plus P is the shortcut key to print a chart or worksheet.
ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज कंट्रोल प्लस F2 इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ अ चार्ट. प्रिंट प्रीव्यू मीन्स व्हाट, बिफोर टेकिंग द फाइनल प्रिंट आउट ऑन अ पेपर. फाइनल प्रिंट आउट लेने से पहले आपको ये अगर देखना है कि पेपर पे वो कैसे प्रिंट होगा, मतलब कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद. सो दैट इज़ योर प्रिंट प्रीव्यू. सो प्रेस कंट्रोल F2. ठीक है. सो वी आर हैविंग 2 शॉर्टकट कीज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. So in this video we have completed our chapter number 4. In the next video we are going to cover the exercise and question answers of this chapter. So that's all. Thank you.